Namaste. Good morning to all. Welcome in online yoga session. I am Deepika and along with me Mr. Pratap Das. Today we will teach you few yoga practices that will help one to improve their heart and lungs fitness and prevent symptoms of asthma. Asthma is a condition that affects the airways of the lungs. It makes breathing difficult, but regular practice of yoga improves lungs capacity, reduces stress, and promotes calmness, which are very beneficial for people who are suffering from asthma. Before I start this session, let me tell you that we are going to practice yoga at a well-sanitized place. Please follow the government guidelines and cooperate with health workers. Stay aware, stay safe, stay healthy. So let's start the session with 3 times Om. For Om chanting, sit in any comfortable meditative posture. Keep your back, neck, head straight. Place your palms in Chin Mudra on your respective knee. Gently close your eyes. Inhale deeply. Feel the vibration of Om around you and in your body. ओम की कंपन को महसूस कीजिए वातावरण में और अपने शरीर में. Now slowly open your eyes. Release your hands position. Stretch your both legs forward one by one. Shake your legs and relax for a while. First we will practice Parvat Asana, mountain pose. For Parvat Asana, sit in any comfortable position like Ardha Padmasana, Padmasana या वज्रासन. आप किसी भी आरामदेह स्थिति में बैठ सकते हैं. Keep your back, neck, head straight. Place your palm beside of your buttock. As you inhale, slowly raise your both hands up from side of your body. Join your palms together in Namaskar Mudra. Stretch your hands up as much as you can. Close your eyes. Breathing should be normal in final position. Feel the stretch towards your back, side of your body, towards your arms and shoulder. Now slowly come back. As you exhale, release your stretch and bring your hands down from side of your body. Place palm side of your buttock. एक बार और इसका अभ्यास करेंगे. श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को शरीर के बगल से ऊपर की ओर उठाएं. हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ दीजिए.
हाथों को ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए, आंखें बंद, श्वास पर श्वास सामान्य। पर्वतासन relaxes the nervous system and massages the heart and lungs. धीरे से वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे शरीर के बगल से नीचे ले आएं, हथेलियां जमीन पर। Open your eyes. Now slowly release your legs position. Stretch your both legs forward one by one. Shake your legs. Place your palm backside. Relax for a while. Next asana is Hasta Parshvasana. For Hasta Parshvasana, you have to sit in Vajrasana. यहाँ ध्यान दीजिए, जिनके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है या जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, वो इस अभ्यास को क्रॉस लेग पोजीशन में या अर्ध पद्मासन में कर सकते हैं। For Hasta Parshvasana, bend your both knees, fold your both legs and come to Vajrasana position. Keep your back, neck, head straight. Now slowly bring your both hands back. Make finger lock, palm facing inward. As you inhale, stretch your hands and lift your hands little up. Expand your chest, look up and maintain the final position with normal breath. Feel the expansion towards your chest. Feel the stretch towards your arm, towards your shoulder. Slowly come back. As you exhale, bring your both hands down and keep your head straight. हाथों को इसी अवस्था में रखिए। फिर से अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचिए। थोड़ा सा ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। छाती में फैलाव, दृष्टि ऊपर की ओर। श्वास पर श्वास सामान्य रखने का प्रयास कीजिए। आसन के प्रभाव को महसूस कीजिए। हस्त पार्श्वासना। Release the stiffness in shoulder, neck and back. The expansion of chest helps to improve breathing. धीरे से वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं, सिर को सीधा रख लीजिए। Now open your finger lock. Place your palms on your thighs. आप सभी वज्रासन में ही बैठे रहिए। अगला अभ्यास करेंगे सुप्त वज्रासन का। For सुप्त वज्रासन, heels apart, legs apart. Place buttocks on mat. Now with support of your both hands, slowly lie down on the back. In final position, place your palms on your thighs. Close your eyes. Breathing should be normal in final position. Feel the expansion towards your chest. In this asana, the chest is stretched and expanded to full capacity, filling the lungs and bringing more oxygen into the system. Very effective practice in respiratory disorder. Slowly come back. With support of your hands, slowly come to sitting position. Relax for a while in Vajrasana position. एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की सहायता लेते हुए एक एक कोहनी आप ज़मीन पर रखें और हाथों की सहायता से पीठ के बल लेटने का प्रयास कीजिए। पीठ के बल लेटने के बाद
दोनों हथेलियों को अपनी जांघ पर रख लीजिए। जांघ पर हो रहे खिंचाव को महसूस कीजिए। आंखें बंद। श्वास प्रश्वास को सामान्य रखने का प्रयास। आसन के प्रभाव को महसूस कीजिए। अब धीरे से वापस आएंगे। दोनों हाथों की सहायता लेते हुए धीरे से उठकर बैठ जाएं और बैठ जाइए वज्रासन में। आंखें बंद, सजगता श्वास प्रश्वास पर। Now release your Vajrasana position. Stretch your both legs forward. Shake your legs, relax for a while. Next asana is Vakrasana, spinal twisting asana. For Vakrasana, join your legs together. Place your palm beside of your buttock. Keep your back, neck, head straight. Now first bend your right knee, fold your right leg and place your right foot beside of your left knee. Remember, your right ankle joint and left knee should be in one line. Now bring your right hand back and place your right palm in line of your spine on mat. Your left palm on left knee. As you inhale, raise your left hand up. Stretch your hand up. As you exhale, bring your left hand down. First cross your right leg and try to hold right big toe, ankle joint. If not possible, hold your calf muscle or knee. Then twist your waist towards right side, look back. Try to look in line of your shoulder. Breathing normal in final position. Try to keep your both shoulder in one line. Close your eyes. Feel the effect of Vakrasana. Very effective practice in respiratory disorder, digestive disorder. Slowly come back. First look straight. Inhale, raise your left hand up, stretch up. As you exhale, bring your left hand down, release your right hand position and stretch your right leg forward. Same practice with other side. Now bend your left knee, fold your left leg and place your left foot beside of your right knee. Bring your left hand back and place your left palm in line of your spine on mat. Right palm on right knee. As you inhale, raise your right hand up, stretch your hand up. As you exhale, bring your right hand down. First cross your left leg, then try to hold left big toe, ankle joint, calf muscle और knee. अगर आप अपने पैर के अंगूठे या टखने को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अपने बाएं घुटने को पकड़कर बाईं जांघ को उधर भाग की ओर दबाइए। कमर पर पीछे की ओर मुड़ाव लेते हुए पीछे बाईं ओर देखिए, कंधे की सीध में। श्वास पर श्वास सामान्य रखने का प्रयास। आंखें बंद। Feel the twist towards your waist and pressure towards your abdomen. Vakrasana gives strength to back muscle. Make your spine flexible and supple. Slowly come back. First look straight. Inhale, raise your right hand up. As you exhale, bring your right hand down. Release your left hand position and stretch your left leg forward. एक बार और इस अभ्यास को करेंगे। Take position, back is straight, head is straight. Now first bend your right knee, fold your right leg and place your right foot beside of your left knee. Bring your right hand back and place your right palm in line of your spine on mat. Left palm on left knee. As you inhale,
Slowly raise your left hand up, stretch your hand up. As you exhale, bring your left hand down, cross your right leg, then try to hold right big toe, ankle joint, calf muscle or knee. Then exhale, twist your waist towards right side, look back, in line of your shoulder. Keep your shoulder in one line. Close your eyes in final position. Breathe normal in final position. Slowly come back, look straight. Inhale, raise your left hand up. Exhale, bring your left hand down. Release your right hand position and stretch your right leg forward. यही अभ्यास बाईं ओर करेंगे. पहले स्थिति लीजिए. अब बाएं पैर को घुटने से मोड़िए और बाएं पंजे को दाएं घुटने के पास रखिए. यहाँ ध्यान दीजिए दायां घुटना और बायां टखना एक सीध में हो. अब बाएं हाथ को पीछे लाइए. बाईं हथेली को मेरुदंड की सीध में ज़मीन पर रखिए. उंगलियां बाहर की ओर. दाईं हथेली दाएं घुटने पर. श्वास लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाइए. ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए. श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को नीचे लाएं. बाएं पैर के बाहरी ओर से लेकर आइए और पकड़ने का प्रयास कीजिए. बाएं पैर का अंगूठा. नहीं हो पा रहा हो तो टखना या घुटना पकड़िए. बाईं ओर कमर पर मुड़ाव लेते हुए पीछे देखिए कंधे की सीध में. श्वास पर श्वास सामान्य. धीरे से वापस आएंगे. सीधा देखिए. श्वास लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाइए. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं हाथ को नीचे लाएं. बाएं हाथ को सीधा कर लीजिए. बाएं पैर को आगे की ओर सीधा कर लीजिए. पैरों में थोड़ी सी दूरी दीजिए. हथेलियां पीछे रखें. पैरों को हिलाइए. थोड़ी देर विश्राम. Now we are going to practice few asanas on abdomen. So please lie down on the abdomen. धीरे से पेट के बल लेट जाइए. सिर की दिशा हमारी ओर रखते हुए. On abdomen, first we will practice Bhujangasana, Cobra pose. For Bhujangasana, take position. Join your legs together. Place your palm beside of your chest, your fingers in line of your shoulder, your elbows with your body, chin on mat. As you inhale, slowly raise your head, shoulder, chest, abdomen up to navel region. Bend your elbows slightly and keep your elbows with your body. Look up in final position. Maintain final position of asana with normal breath. Bhujangasana strengthens the heart, lungs and the spine. It is also useful in the management of asthma, bronchitis and obesity. Slowly come back. As you exhale, slowly abdomen down, chest down, chin on mat. हाथों को इसी अवस्था में रखिए. फिर से अभ्यास करेंगे. श्वास लेते हुए धीरे से सिर, कंधा, छाती, उदर भाग को नाभि तक उठाइए. कोहनियों को हल्का सा मोड़ कर रखिए और शरीर के साथ मिलाकर रखिए. दृष्टि ऊपर की ओर. कंधों को ढीला छोड़ दीजिए. श्वास पर श्वास सामान्य. कुछ देर आसन की स्थिति को बनाने का प्रयास कीजिए. धीरे से वापस आएंगे. श्वास छोड़ते हुए शरीर को नीचे लाएं. ठुड्डी जमीन पर. Now release your hands position. Place your palms one over the other. Place chin on the palm, legs apart,
Relax in Makarasana. Try to keep your breath normal. Next asana is Dhanur Asana, bow pose. For Dhanur Asana, stretch your both hands forward, legs slightly apart. Now bend your both knees, fold your both legs, and bring your heels close towards your buttocks. Now bring your hands one by one back and hold your ankle joint. As you inhale, first lift your knees and thighs up, then slowly raise your head, shoulder and chest up. Look up and try to make your balance on your abdomen. Keep your hands straight. Breathing normal in final position. Dhanurasana is useful for relieving various chest elements, including asthma, bronchitis. As you exhale, slowly come back, bring your legs head down, release your legs position. Relax for a while. एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। हाथों को आगे की ओर खींचकर रखिए, पैरों में हल्की सी दूरी रखिए। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए और एड़ियों को नितंब के पास लाने का प्रयास कीजिए। एक एक करके हाथ को पीछे लाइए और अपने टखने को पकड़ लीजिए। अब श्वास लेते हुए पहले घुटने और जांघ को ऊपर उठाइए अपनी क्षमता के अनुसार। फिर धीरे से सिर, कंधा, छाती को ऊपर उठाएं। शरीर का संतुलन उदर भाग पर रखने का प्रयास कीजिए। दृष्टि ऊपर की ओर, श्वास प्रश्वास सामान्य। हाथों को सीधा रखिए। Dhanurasana increase the blood circulation towards thoracic region. Dhanurasana improves breathing. धीरे से वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए पैरों और सिर को नीचे लाएं। पैरों को सीधा कर लीजिए। विश्राम कीजिए मकरासन में। एक के ऊपर एक हथेली रखिए। हथेली पे ठुड्डी को या माथे को रखिए। पैरों में हल्की सी दूरी बना के रखिए। आँखें बंद। सजगता श्वास प्रश्वास पर। श्वास प्रश्वास को सामान्य करने का प्रयास कीजिए। Now we are going to practice pranayam. For pranayam practice, first come to sitting position. Place your palm beside of your chest. Raise your head, shoulder, chest, abdomen. Bend your knee, stand on knee. Now as you exhale, bring your buttocks down towards your heels. Stretch your hands forward. As you inhale, raise your both hands up, straight your back. As you exhale, bring your hands down. Now sit in any comfortable meditative posture. प्राणायाम के अभ्यास के लिए आप किसी भी आरामदायक ध्यानात्मक स्थिति में बैठिए, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुख आसन. Place your palms in chin mudra on your respective knee. Keep your back, neck, head straight. Close your eyes. Take few deep breaths in and out. Bring your awareness towards your breath and prepare yourself for pranayam practice.
हर एक श्वास पर श्वास के प्रति सजग बनिए और प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। First we will practice Vakshya Shwashan Abhyas, lungs breathing. In Vakshya Shwashan Abhyas, you have to inhale in 4 counts, hold the breath in for 2 counts, exhale in 6 counts, and hold the breath out for 2 counts. In Vakshya Shwashan Abhyas, while inhaling you have to raise your hands, and while exhaling you have to bring your hands down. Take position for this practice. Stretch your both hands forward. Start the practice. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold breath in. 1, 2. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hold breath out. 1, 2. श्वास लीजिए। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। 1, 2, 3, 4। श्वास को भीतर रोकिए। 1, 2। श्वास को छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। श्वास को बाहर रोकिए। 1, 2। फिर से अभ्यास करेंगे। इनहेल 1, 2, 3, 4. Hold breath in. 1, 2. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hold breath out. 1, 2. 2 बार और अभ्यास करेंगे। श्वास लीजिए। 1, 2, 3, 4। श्वास भीतर रोकिए। 1, 2। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। श्वास बाहर की ओर रोकिए। 1, 2। नाउ वी विल प्रैक्टिस लास्ट राउंड। इनहेल 1, 2, 3, 4. होल्ड ब्रेथ इन 1, 2. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hold breath out. 1, 2. Now release your hands position. Do normal breathing. Next practice is Kapalbhati. In Kapalbhati, you have to emphasize on forceful exhalation through both the nostril. And with each and every exhalation, you have to contract lower abdomen in. In Kapalbhati, exhalation is active and inhalation is passive. Here we are going to practice 2 rounds. In each and every round, you have to give 40 to 45 strokes. Take position. Inhale deeply, exhale and start. Last stroke, complete breath out. Observe the breath. Kapalbhati, effective practice in respiratory disorder like asthma, bronchitis. फिर से अभ्यास करेंगे। शक्तिपूर्ण दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर छोड़िए और पेट को अंदर की ओर खींचिए। अभ्यास शुरू करें।
Last stroke, complete breath out. Observe the breath. Kapalbhati cleanses your respiratory tract, your nasal tract. Effective practice in obesity and diabetes. आँखों को बंधी रखिए। कक्षा के अंत में हम सभी मिलकर 1 ओम और 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास लीजिए। ओम शांति शांति शांति। शांति का अनुभव कीजिए। Now slowly release your hands position. Rub your palm with each other, make them warm. Make cup shape of your palms and keep on your closed eyes. Relax your eyes. Open your eyes inside your palms, blink your eyes. Now release your hands position, bring your hands down. Thank you for being with us. See you tomorrow at same time. Namaskar.